अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक भाई डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है कि और कहता है कि एक मुसलमान जो कि गाने गाता है हिंदुस्तान में, उसने हमारे मज़हब के बारे में गाने में तौहीन की है, तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बेहतरीन जवाब देते हैं। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। What does Islam say about the defaming of the other religion or other religious gods? Why I am asking this question is that when one of the Indian artists who is a Muslim, he has drawn a Hindu god Saraswati in a nude condition, which was appreciated by everybody as a freedom of expression. And each and every Indian supported when Salman Rushdie has written one book about the Islam. And when it was banned by Rajiv Gandhi, almost each and every Indian has supported that move. But when Hussein has drawn the Hindu god in a nude condition, Indian political parties, especially the parties like a communist, have told that it is a freedom of expression, he can draw anything. But what is the Islam's view on that, about the defaming the gods of the other religion? The brother is referring to the Muslim artist F.M. Hussain. He didn't give the name, or maybe he doesn't know, maybe he knows, he didn't want to give the name. F.M. Hussain, he's from Bombay, from the city where I come. He did some paintings of God Saraswati, unclothed, and many of the journalists supported, saying freedom of expression. You ask my opinion, first of all, making a nude picture of any lady, whether God or not God, is haram in Islam. Whether Muslim or non-Muslim. It is unethical, inhuman. Why do you want to sell your daughters? Why are you going back? See what's happening in the Western cultures. They are selling our sisters, selling our mothers, and one of the famous ads which I heard about BMW. You know BMW car? You know about the BMW car? It is somewhat like Mercedes for the youngsters. Mercedes, top level car. In that ad, I'm sorry to say, I was told that there's a lady standing in the bikini in front of that car, and it's mentioned there, test drive her now. Who, the car or the girl? What has the girl got to do with the car? So this is all in name of freedom of expression that degrading the women. What F.M. Hussain did is totally wrong. Regarding a basic question, can you criticize the other gods of other religion? Allah says in the Quran, in Surah Anam, chapter number 6, verse number 108, revile not those, abuse not those who they worship God besides Allah, lest in their ignorance they will abuse Allah subhanahu wa ta'ala. Quran says, abuse not those gods who the people worship besides Allah, lest in their ignorance they will abuse Allah subhanahu wa ta'ala. So in Islam, it is prohibited to abuse anyone else's God, even though you may not agree is God. It's prohibited. That's what the Quran says in Surah Anam, chapter number 6, verse 108. And what F.M. Hussain did, drawing the nude painting, is totally prohibited in Islam. Hope that's the question. Wa-akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों बहुत बेहतरीन वीडियो थी। जैसे कि इस भाई ने कहा दोस्तों कि इस्लाम, लेकिन जो जितने भी मज़हब है, अगर कोई मज़हब के बारे में तौहीन करे तो उस बारे में इस्लाम क्या कहता है, जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। दोस्तों, इस बंदे ने तो इस गाने वाले का नाम नहीं लिया जिसने कि हिंदू मज़हब की तौहीन की है अपने गाने में, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका नाम लिया है। उसका नाम जो है F.M. हुसैन नाम है, और उसने जो गाना गाया था, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान के जितने भी सियासतदान थे, सियासत वाले जो लोग थे, उसने कहा था कि इसको एक नाम दे दिया गया कि आज़ादी के लिए इसने ये गाना गाया है। उसने ऐसा काम किया था दोस्तों कि सरस्वती के जो पिक्चर के एक लड़की जो पिक्चर थी, उसमें वो बनाई थी, और फिर वो स्टेज पर लाई गई, और ऊपर उसके ऊपर वो गाना गा रहा था। ये एक तौहीन कर रहे थे दोस्तों, एक तौहीन कर रहे थे, जिस पर बहुत से हिंदुस्तानी जो है इन पर आ गए थे। उन लोगों ने जो है वो कह दिया कि ये हमारे इस्लाम की तौहीन कर रहा है, ये है वो है, जिस पर उनके सियासतदानों ने कहा कि क्या है दोस्तों, कि ये एक आज़ादी के लिए है। लेकिन जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे कुरान मजीद में है कि जितने भी मज़हब है उनको अपने मज़हब में अपनी इबादत करने की फुल इजाज़त है, और कोई भी हम किसी मज़हब को बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये हराम है। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हर किसी को अपने मज़हब की इबादत करने की इजाज़त है, लेकिन अगर वो शख्स दोस्तों जो कि अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग करे तो उसको या कत्ल कर दिया जाए या उसको संसार कर दिया जाए।
یہ بات کر رہا ہوں دوستو، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سلمان رشدی کے بارے میں ہے، جیسے کہ اس نے کتاب لکھی گئی، لیکن بہت سے ایسے ممالک تھے جس کو اس نے انعامات دی ہے یا انعامات سے نوازا کیا، لیکن اس شخص کو جو ہے اسلام میں جو ہے سنسان کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ جو بندہ ہے جو کہ مذہب کے بارے میں توہین کرتا ہے، ایف ایم حسین، یہ کہ طرح بالکل غلط کام کر رہا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، جیسے کہ ہندوستان کے مذہب کی توہین کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ لوگوں، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جو کہ عورت کی تصویر تھی، اس پر اس کی پھر توہین کی گئی ہے، جس کو ہندوستان میں دیوتا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں، بہرحال جو بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی توہین کی گئی، لیکن یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے، یہ اس نے بالکل غلط کام کیا ہے دوستو۔ تو دوستو ہر کسی کو جو ہے اپنے مذہب میں اپنے مذہب کی عبادت کرنے کی فل اجازت ہے، اور ہر کسی کو جو ہے اپنے مذہب کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اور اسلام جو ہے اور مذہب کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بندے کو بہت بہترین جواب دیا ہے، اور امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ جواب آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔